जय माता दी आदेश. Good evening, guys. Namaskar. Good evening. Seven, 3, 8, 1. Okay. US market is down. Tax is down. Okay. So, Namaskar. Good evening. And let us start with today's discussion. I'm sorry I'm late by 25 minutes. That is why I've said that please subscribe to the channel and press the bell notification, because then you will get the notification whenever I'm coming online. That will save your time. Okay, so let's start today's session. We'll take Nifty futures first. Okay, Nifty futures से शुरू करते हैं. नमस्कार, गुड इवनिंग. सो आज आफ्टरनून में क्या व्यू था? आफ्टरनून में अराउंड 12 o'clock 12:30 आई केम. दैट टाइम हमने क्या डिस्कशन किया था कि निफ्टी फ्यूचर्स जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, राइट, एंड ये इसके ऊपर ब्रेक करेगा एक बार, राइट. सो इसने ब्रेकआउट किया अराउंड आई थिंक 12,015 समथिंग यहाँ तक गया था, एंड देन यहाँ पे वापस एक सेलिंग आया एंड इट क्लोज्ड एग्जैक्टली एट दी वीवैप. ओके, सो निफ्टी फ्यूचर्स में मोर और लेस कुछ खास आज मूवमेंट ये नहीं हुआ है. नमस्कार, गुड इवनिंग. ओके, एंड okay, so let us see what is the levels for tomorrow and what am I expecting for tomorrow. Okay, so for tomorrow the Nifty mob level will be this. It will be, yeah, it will be this one. 940, 925, 925, 939. Yeah, I'm doing live analysis. I have not checked any charts, so that is why. Okay, so oops. Okay, all right. So and then this 12,020. This will be for target and 920 ठीक है. Okay, all right. Okay, so yeah, we'll discuss Tata Steel, HUL, everything. All right, so for tomorrow Nifty mob level is, trend deciding level is 11,000. What is this level? Let me check just a second. Let me update the charts. What is this? 11,962. We don't need this level. Okay, 1,945. So 11,945. Let me, and this is 930, 920. This is fine. First target is 12,020. That is fine. And this, okay, fine. Okay, so we are ready now. So Nifty futures tomorrow, the mob level, trend deciding level is 11,945. Okay, 11,945. On the downside, you have 11,920 as a strong support. Now for tomorrow, namaskar, good evening. For tomorrow, 11,920 is a very, very important level. Okay, this
Ideally, this should act as a strong support for tomorrow. Okay, but suppose if some news comes, because still you have the entire night before market opens. So if some unforeseen news etc comes, and if this level is broken, then market can fall very badly. Okay, because today's low, okay, 11,855, this level will come in near future. This level has to come in near future. But ideally, if big boys really want to bring this level, they will not bring it in this manner. Okay, they will first take market on higher side, and in next round they will bring this level. Okay, this is how generally 80-90% of the time markets work. Okay, so for tomorrow the mob level is 11,945, which is this level. Okay, and holding this, I am looking at 12,020 as first resistance on upside, followed by 12,060. 12,060. So these two are the upside targets. Bias is little positive, but if market is not sustaining above 11,945 by 11:30, if market is not sustaining above this level by 11:30, then there might be a selling, and market would like to come down near this level. Okay, so 11,920, 11,900 on Nifty futures, this might be seen. However, I feel market will hold as of now, and we have a pretty good bottom today as per the daily chart of Nifty and Sensex both. So what I'm expecting is, I don't know where market will open tomorrow, but overall I feel market will do something like this. This should be the tomorrow's trajectory. If we open flat or if we open gap down, I'm expecting a recovery tomorrow towards 12,020 and 12,060. All right. So I'm not expecting this level of 11,920 to be taken out at least tomorrow. It may happen on Wednesday, Thursday, Friday. That we'll see. But for tomorrow, this is what I'm expecting market to do. These are the levels. I'll repeat once again. The mob level, trend deciding level is 11,945. Okay. And upside target is 12,020 and 12,060. On the downside, 11,920 is a very strong support for now, and I'm expecting this level to hold for tomorrow. All right. So this is the trajectory which I'm saying. Now, supposing there is a gap up, if market opens somewhere over here, then based on opening, we'll have to find the trade, because if it opens in the center of tomorrow's tradable range, then it becomes difficult to trade, because it is easy to trade on either sides because the odds are in favor, risk reward is very suitable. But if anything opens in the center of a expected range, it becomes very difficult to trade. Agree? Right? So if it opens in the center, then we'll have to see as per the opening, and then it will have to wait for some pullback to take long, or if it directly goes up, then we'll have to look for some minor short trade during the initial couple of hours. Okay, so this is roughly the plan. These are the levels. 12,060 remains the weekly mob level. I have told yesterday also, this is the weekly trend deciding level as well. All right, 12,060. Market, if at all there is any bullishness left in market, by Friday, market should close at or about 12,060. Okay, if we do not close at or about 12,060, that will be a hint that there is a bigger correction which is going to unfold in market, and downside minimum target is 11,680. 11,680. This is the minimum target
if we do not reclaim this territory by Friday. Okay, it will be sign that we have closed for 2 consecutive weeks below 12,060, which will bring selling pressure. Okay, so let's see what bulls do, and there's a chance that they might sustain or hold the market as of now, but let's see. So tomorrow, this is the plan, this is the projection. Now I will discuss bank nifty. So in bank nifty, before I proceed to bank nifty, please like the video, share and subscribe and hit the bell notification. आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियोस को, शेयर नहीं करते हो, so I will also stop making these videos. Already a couple of days I didn't do any live session during market hours, because if you guys don't promote our channel, if you guys don't motivate, then how are we going to do? There has to be enthusiasm, right? Because it takes time to analyze, then come live and then speak on all these things. It is not very easy. Bank Nifty futures. So Bank Nifty futures, when I come online today afternoon, so Bank Nifty had said that Bank Nifty will touch what level? क्या लेवल मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी टच करेगा? किसी को अगर याद हो तो? This is the 5-minute chart. 31,625. Okay, so when Bank Nifty was over here, so that time I had said that at least once we will touch 31,625. So that level was almost touched. I think the high is 31,610. And then I had also said that I do not see Bank Nifty trading above this 625 today, because it might touch and come down, but I do not see it trading above this level for today. Now for tomorrow, what is the trend deciding level for tomorrow in Bank Nifty futures? How many people trade Bank Nifty? Bank Nifty. How many people who are attending live session? How many of you trade Bank Nifty? Let me see how many people are trading Bank Nifty. Maybe say on regular basis, or maybe alternate day, or how many people trade Bank Nifty? I think most of you are trading stocks. Okay, so yeah, I know about you because you are in our student group, so I know. I just wanted to get a feel that how many people are trading Bank Nifty. Okay, so nobody is interested in typing. We as Indians are one of the most laziest in the world. Okay, so anyways, so since nobody is trading Bank Nifty, I don't think we should discuss then. What is the point in discussing? Occasionally, people trade. Some people trade on Wednesday and Thursday. Okay. So I think there is only one guy who trade on regular basis. Okay, chalo fine, ठीक है. Okay, so Bank Nifty, if you see, and now what is this candle? What is this candle? I think Kotresh, you attended this week training, right? So 625 was our barrier, right? So this was our location. This candle gave the price confirmation, and then it was the time to short, right? So I think that is when you bought a put option and made some money, right? So see, this is what we are trying to teach in a very, very simple and lucid manner. Find the probable areas of reversal, wait for price to come over there. Once price is giving you signal that it is ready to turn, that is the time when you take the trade, hit the trigger. All right. So Kotresh, I think you traded this put option. Yeah, just be very quick in profit booking, because by the time you will ask me and I will read and I will reply, this Bank Nifty and all, especially the options, they are very volatile, they are beast.
राइट। सो जब तक मैं पढ़ के रिप्लाई करूंगा तब तक आपका प्रॉफिट चल जाएगा। तो इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग हर इंसान को अपने हिसाब से कर लेना चाहिए, राइट। क्योंकि रेफरेंस तो हम दे ही रहे, एक रेफरेंस लेवल्स और व्यू और बायस और एक ड्रॉ करके जो ट्रेजेक्ट्री हम दिखा रहे हैं वो तो आपके पास है ही, उसको थोड़ा खुद से अब यूज करो, उससे ही वो ज्यादा बेहतर होगा। सो आई थिंक दिस वाज परफेक्टली, बैंक निफ्टी इट बिहेव्ड exactly as per expectation. So 625 was my last hope for Bank Nifty, and it was trading near 450 when I came in afternoon session. That time also I said that it will reach towards this level. It might not cross, it might not trade above that, but it will at least touch and probably come down again. So this candle gave the sell signal. If anybody had shorted over here also, he would have got at least say 100 points to at least milta, so it is not that tough if you are very disciplined and price action trader. Bank Nifty and Nifty futures, it is especially Bank Nifty, it's a very good script to trade. Okay. Anyways, so we are here to discuss what are the possibilities for tomorrow's session. So what I'll do is I'll I will give you the levels for tomorrow. Okay. So for tomorrow on Bank Nifty futures, let me just see the Bank Nifty spot. Uh, so Bank Nifty spot has closed 25 points in negative, and there is lot of premium. Now this is, you know, this premium should reduce tomorrow. All right. Now if we see the your daily chart, on a daily chart, this is good. This is what I liked about today's session, that this doji had a good support. This is a good sign. Okay. So 715 and 316 any 400 point. Okay, now just a second, I'm doing some analysis. 400 upar and okay, okay. Okay. Mhm. Okay, so for Bank Nifty, my initial bias for tomorrow is slightly bullish. Okay, so 65% bullish bias is there for Bank Nifty. For trading per se, the mob level I'm keeping for tomorrow is 275. Okay, so I'm shifting the mob level on a lower side, right? I've shifted the mob level on Nifty also now, so I will shift over here also. So basically this is the mob level for tomorrow, 31,275. Okay, and first target is 31,625 on upside, so this is a good 400 points band. Okay, on the downside for tomorrow, I believe 31,125. So 31125. This should hold tomorrow, at least for tomorrow. Okay, so this should hold, and Bank Nifty tomorrow will try its best to cross 31,625, and it will try, bulls will try hard to capture 31,625 and try to close above this level. So for Bank Nifty, the mob level is 31,275. This is the trend deciding level. Above this, we are looking at 31,625. Okay, now this is a very crucial level. So once 31,625 is crossed, 31,800 will come very quickly, very quickly. Maybe in a single candle or two candles it will do. Okay, so these are the levels on upside. On the downside for tomorrow, 31,125 is the last support that I am looking, and I am expecting that it will hold, and Bank Nifty should do something like this. So this will be the trajectory for Bank Nifty. Okay, so these are the levels. Now 31,125, this has to hold because this is very crucial level for Bank Nifty. Okay,
There is a pending gap near 30,000. I think it's somewhere around 850, 30,850. So this gap, now see, आज का जो निफ्टी फ्यूचर्स पे जो लो बना है विच इज 11,855, अब क्या हो चुका है कि बैंक निफ्टी पे ये जो गैप है 850 के आसपास, ये लेवल, और निफ्टी फ्यूचर्स पे आज का लो 11,855, ये लेवल, ये दोनों जो है ना, ये अब मार्केट को टेस्ट करना है। ओके, मार्केट को ये टेस्ट करना है। टेस्ट इन द सेंस TASTE, नॉट TEST। ओके, मार्केट को चखना है ये दोनों लेवल्स। तो पहले तो सिर्फ क्या बोलते हैं, बैंक निफ्टी पे था 855 850 वाला गैप, बट आज फ्री ट्रेड की वजह से निफ्टी पे भी क्रिएट हो गया, यानी दोनों में एक सिमिलैरिटी एक क्रिएट हो गई। जब दोनों में एक सिमिलैरिटी क्रिएट हो गई, यानी इन दोनों लेवल्स का टेस्ट होना निश्चित है, लगभग निश्चित है। ओके, सो नियर फ्यूचर में ये होगा। तो इसीलिए बैंक निफ्टी पे 31,125 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसको होल्ड करना ही चाहिए। ओके, सो बुल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जब हम अगर कल ऐसे कुछ दिखाई दे कि 31,275 के पास आके यहाँ से ये यू टर्न ले रहा है, तब तो ठीक है, देन आवर हायर लेवल्स आर गोइंग टू कम। बट सपोज अगर ऐसा हो रहा है कि इट कम्स डाउन ओवर हियर एंड इट इज जस्ट गोइंग साइडवेज 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 साइडवेज, तो हमको अलर्ट हो जाना है। That time we have to be alert and put your stop loss somewhere below this in the system. Okay, or else what will happen is it will break down and then go towards this. Okay, और जब अगर बैंक निफ्टी ये चीज करेगा तो फिर निफ्टी भी करेगा, राइट? क्योंकि अब दोनों एक सिंक्रोनाइज्ड हो चुके हैं लोअर लेवल्स के लिए। अच्छा, हायर लेवल्स के लिए दोनों में एक सिंक्रोनाइज्ड लेवल क्या है ये बता रहा हूं मैं। सिंक्रोनाइज्ड लेवल है 12,060 ऑन निफ्टी फ्यूचर्स, एंड बैंक निफ्टी पे इट इज 31,925, 31,925। तो अब आप देखो, ये दोनों ऊपर के लेवल्स हैं और ये दोनों नीचे के लेवल्स हैं, राइट? ये दोनों नीचे के लेवल्स हैं। सो लगभग 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी पे है और लगभग 200 पॉइंट निफ्टी पे है, राइट? सो ये भी एक बार आएगा एंड इवेंचुअली इसको भी आना है। सो लेट्स सी विच कम्स फर्स्ट। ट्रेड प्लान दोनों के लिए रेडी है, लेवल्स रेडी है, मॉब लेवल भी रेडी है। नाउ यू हैव टू एक्ट, यू हैव टू रिएक्ट एज पर द मार्केट कंडीशंस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर योर इंडेक्स Nifty and Bank Nifty analysis. So that's all from my side. Now we'll come to stocks. I hope I have explained in a very clear manner how to trade Nifty, Bank Nifty, what will be the bias and levels and everything for tomorrow. All right. Now crude oil की एक बार बात कर लेते हैं quickly. Crude oil जो है आज डाउनसाइड के लिए क्या सपोर्ट, लास्ट सपोर्ट क्या था क्रूड ऑयल में, किसी को याद है? अगर कोई MCX ट्रेडर है तो। बिटकॉइन में बल्ले बल्ले हो रहा है, बिटकॉइन में 7,300 अभी यार बोल दिया हूं तो एक बार आना तो चाहिए। तो 7,300 रेडी हो रहा है। देखो 7383 कैंडल ने लो लगाया है, बोल रहा हूँ ना, ये इसको एक बार नीचे आना है, इसको जो है एक बार नीचे आना है। 73 ब्रेक करने दो बिटकॉइन को, तब मजा आएगा। ओके, अगर इसको यहाँ पे हम देखें तो ये जो है इसका बस ये लास्ट सपोर्ट है, असेंडिंग ट्रायंगल या बेयर फ्लैग आप बोलो, बस इसके अंदर से जैसे ये ब्रेक डाउन होगा गेम बिगिंस। तो देखते हैं ना, अभी 12 बजने तो ना बिटकॉइन के लिए, 12:30 बजे से शुरू होगा। ओके, पहले NSE की बात करते हैं क्योंकि मैक्सिमम हमारी ऑडियंस जो है NSE MCX की डिस्कशन हम लोग करते हैं। सो क्रूड ऑयल का आज बॉटम क्या सपोर्ट था? इथेरियम रुको, मैं थोड़ा डिटेल में अभी सिर्फ बिटकॉइन ही देख रहा हूँ। इथेरियम और XRP, लाइट कॉइन्स, ऑल्ट कॉइन्स, सारी चीजें जो है अब शुरू करूंगा मैं। टाइम नहीं मिलता दोस्त, टाइम नहीं मिलता। NSE MCX ऑलरेडी इतने टू मच है। आप लोग थोड़ा प्रमोट करो चैनल, जब थोड़े 1000-2000 ऑडियंस सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब क्या थोड़ा मन भी करता है थोड़ा एफर्ट्स लगा के करना।
बाकी देखो मार्केट 7-8 घंटे तो मार्केट में ही चल जाते हैं। टीसीएस देखो 2075 क्या लेवल बोला था टीसीएस पे, 2075 मिनिमम आना चाहिए। 2068 की फ्यूचर्स पे क्लोजिंग है। सो टीसीएस जो है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय चार्ट्स टू लोड, जस्ट अ सेकेंड। ओके सो वंस, okay, so let me just see. Okay, so what I'll do is I'll start with the stocks first. So ठीक है, मिस्टर राम ने पूछा है टीसीएस, तो टीसीएस की बात करते हैं। तो टीसीएस downside level for today is done. Now TCS important support is at 2050. Okay, 2050, and yeah, 2050 is the strong support. TCS should bounce from these levels. Okay, TCS should take support at 2050 and bounce back. Okay, so what will be resistance on TCS? 2100. So TCS the levels are this. You see TCS the levels are this, that you have 2050 is last and most important support for TCS. About 2050 you will have 2100 as the first target and first resistance. Daily closing at or above 2100, then journey resumes. Okay, so this is one, this is two, and then it will be third for 2200. ठीक है, तो अब देखो ये बाजार को रीड कैसे करना है दोस्तों, ये चीज समझना है। देखो ये लेवल्स हो गया, ठीक है। अब बाजार को रीड कैसे करना है, सपोज 2050 पे टीसीएस आता है और टीसीएस ने स्पाइक दिया 20 पॉइंट का, अब टीसीएस चल गया 2070, ठीक है। तो मार्केट्स में ना ट्रेडिंग में एक लॉ होता है, लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, ठीक है। अब एफर्ट को आप बाजार में दो तरीके से नाप सकते हो। एक तरीका है वॉल्यूम के थ्रू देखने का, दूसरा तरीका है टाइम के थ्रू देखने का, ठीक है। और रिजल्ट आप कैसे नापोगे? प्राइस मूवमेंट से, ठीक है। तो वॉल्यूम ज्यादा लोग देखते हैं, मैं इसको इग्नोर करता हूं, मैं टाइम देखता हूं, टाइम देखता हूं, ठीक है। तो सपोज अगर 2050 मेरा बेंचमार्क सपोर्ट था फॉर टीसीएस, और यहां आते ही टीसीएस ने अगर 20 पॉइंट की छलांग लगाई है, ओके, एक फास्ट एक जंप दिया है, यानी यहां पे ये मुझे एक हिंट मिल जाएगा कि यहां पे रिस्पॉन्सिव बायर बैठा है, यहाँ पे कोई पार्टी थी इंटरेस्टेड जो पहली वेट कर रही थी और उसने बड़ा बाय किया है यहाँ पे। तो ये पहला बुलिश साइन है, पहला बुलिश साइन है। अब साइन मिलने से कुछ नहीं होता, साइन तो एक इशारा होता है, ठीक है। मेन मूव कब शुरू होता है कि इशारे के बाद कंटिन्यूएशन हो। सो सपोज टीसीएस फिर थोड़ा पुल बैक आता है 10 पॉइंट 2060। अब अगर ये इसको ब्रेक कर देगा, अब इसको अगर ब्रेक कर देगा, दैट मीन्स ये गारंटी 2100 जा रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ना 30 पॉइंट का, ये गारंटी वाली इनकम है, ये गारंटी वाली इनकम है। ये पहले वाली जो इनकम है ये स्पेक्युलेटिव इनकम है, यानी ये सट्टा है, ये सट्टा है, ये गारंटी है ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रेड्स करने के, खैर। तो एनीवेज ये थोड़ा मैं एजुकेशनल वैल्यू दे रहा था। सो फॉर टीसीएस 2050 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल and 2100 is the next resistance. Once we close at or around about 2100, the journey for wave 3 towards 2200 and the higher levels will begin. All right, closing below 2050, then do not go long, wait for Wednesday. Okay, wait for Wednesday. So this is how TCS we have to trade. Okay, so you are saying Jubilant worked as I had said. Yeah, 1582. See, कल ही हमने आज आफ्टरनून में डिस्कस किया था या कल किया था, सेम था 1630 पे 1620। इसका हाई क्या है? 1621। या इसको बिंदास शॉर्ट करो, आई एम टेलिंग यू। 1620s में शॉर्ट, 1580s में कवर। ओके, जब तक ये चल रहा है इसको आप कर सकते हो। सो जुबिलियंट फूडवर्क में कुछ खास डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, somebody is saying
CESC bounced from 720 level, which I had told some time back. Okay, CSC, let me see. I have not checked CSC. Okay, so let me see. Any other stock query? View on. Okay, I do not see any other stock query. So I will check CSC as of now. Let me see CSC. CESC 720. Okay, so what is your query? CSC as to यार आप 790 की आपकी बाय है और आप इतना आप कैश में ओके ठीक है देखो रिवर्सल इज वेरी नाइस वॉल्यूम इज अबव एवरेज एंड एट प्रीवियस दिस थिंग ओके बट इसमें स्ट्रेंथ आएगा 740 740 क्रॉस करेगा ना तो ये आपका कॉस्ट 790 वाला आ जाएगा ओके आपने बहुत ऊपर बाय कर लिया है बहुत ऊपर बाय कर लिया है देखो बाजार क्या करता है अगर ये प्रीवियस जोन है ये सपोर्ट है प्रीवियस स्विंग लो यहाँ पे है बाजार अगर उस लेवल पे आके इस तरीके से सस्टेन करने लगता है ओके तो ये हिंट होता है कि ये लेवल ब्रेक होगा ओके बाजार में देखो मूवमेंट कैसे आ रहा है बाजार में मूवमेंट दो टाइप से आता है एक होता है रिस्पॉन्सिव बाइंग और एक होता है रिएक्शन तो रिस्पॉन्सिव बायर्स कौन होते हैं जो ना थोड़े लार्जर बायर्स हैं सो व्हाट दे डू इज उनके लिए ये प्राइस की अहमियत है सो ये आते ही वो एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करते हैं जब स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट नहीं हो रहा है और प्राइस सपोर्ट प्रीवियस सपोर्ट के पास इस तरीके से बना रहा है स्ट्रक्चर ये श्योर शॉर्ट साइन होता है कि ये ब्रेक करेगा स्ट्रक्चर because there is no responsive buyer it is taking support but there is no responsive buying happening when there is no responsive buying it will break all right so ये हिंट होता है इस तरीके से हमको इंट्राडे और पोजिशनल में ये थोड़ा सा एक आइडिया आ जाता है कि ये होल्ड करेगा या ब्रेक करेगा ऑल राइट एचयूएल सॉरी एचयूएल मुझे डिस्कस करना था एचयूएल में देखो रिवर्सल हो ही नहीं रहा है आई थिंक पहले इसका सम 2080 या 2055 दो हफ्ते पहले इस पे डिस्कशन हुआ था 2080 का आई थिंक आई हैड गिवन वन लेवल कि 2080 जब तक क्रॉस नहीं करेगा ये नहीं होगा सी एचयूएल में भी देखो यही चीज है जो मैं जस्ट अभी जो डिस्कस कर रहा था सेम थिंग ये प्रीवियस सपोर्ट है लुक व्हाट इट वाज डूइंग हियर अभी मैं जस्ट यही चीज एक्सप्लेन कर रहा था राइट और देखो ये सामने की एग्जांपल आ गया नो रिस्पॉन्सिव बाइंग हाँ इट इज टेकिंग सपोर्ट बट नो रिस्पॉन्सिव बाइंग तो ये क्या होता है ये रिटेल ट्रेडर को फूल करने का टेक्निक होता है कि उसको सपोर्ट पे टिका के रखो रिटेल ट्रेडर प्रीवियस सपोर्ट देख के यहाँ बाय करेगा और फिर उसको ये ब्रेक करवाएंगे सो दैट रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जाए अब इसके बाद या तो ये बड़ी फॉल ला सकते हैं या तो फिर जब रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे आउट हो गए तब इसके बाद ये मूव शुरू होगा all right so in this stock HUL there is no sign of reversal as of now we would like to see 2040 for reversal about 2040 reversal will happen not before that so I think today's high is 2040 if I'm not wrong today high yes it is 2040 so 2040 is the level for reversal below 2040 it is weak okay so that's the view on HUL LT Larson and Tubro finally आज आ गया हमारे टारगेट पे 1265 1270 was the target given 2 days back आज आफ्टरनून में भी इसको मैंने सेम चीज मैंने कही थी कि ये इवेंचुअली ये गिरने वाला है राइट सो लार्सन टूब्रो में हो गया गेम आफ्टरनून वीडियो आप लोग प्लेबैक करके देखो इसमें यही चीज मैंने कहा था राइट सी इट इज टेकिंग सपोर्ट 3 दिन तक सपोर्ट लिया बट अपसाइड नहीं जा रहा है राइट सो दिस शोज दैट देयर इज लैक ऑफ बाइंग ये सिर्फ एक पॉज ले रहा है सो आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है लार्सन ने अब लार्सन का मॉब लेवल शिफ्ट हो जाता है 1295 अब लार्सन पे जो करंट मॉब लेवल है ये है 1295
के नीचे जब तक है लार्सन वीक है। ओके, इसके ऊपर क्लोज होगा तो लार्सन में एक स्ट्रेंथ आएगा। ओके, बट 1295 के ऊपर ही, उसके नीचे वीक है। सो दैट्स द व्यू ऑन LNT। एक्सिस बैंक में एक शॉर्ट कवरिंग आज आया है। ओके, बट इट इज अ फेक, इट इज प्योरली शॉर्ट कवरिंग, इसमें कोई बाइंग नहीं है। एक्सिस बैंक में जो लेवल है आई had already given, 748 is the main level for this Axis Bank, and 736 is next important level. Okay, so for tomorrow Axis Bank में, for tomorrow Axis Bank के लिए मैं इसमें एक लेवल ये दे सकता हूँ कि आप 738 ही सूटेबल होगा कल के लिए। सो एक्सिस बैंक में कल के लिए 738 रहेगा मॉब लेवल, above 738, 748 and below this 728। बस 3 लेवल याद रखना है, 10-10 पॉइंट का गैप है। ओके, 10-10 पॉइंट का गैप है। सो 738 इज द सेंट्रल लेवल, दिस इज द मॉब लेवल, below 10 points, above 10 points। Okay, now tomorrow if it closes below say 732, if it closes at or below 732, then Axis Bank will fall very hard, Axis Bank will fall very hard। Okay, so ये टेप रीडिंग का लेवल मैं आपको दे चुका हूँ, इसको ध्यान में रखना कल। राइट, so I think yeah, that's about the stocks। Infosys 725 रेजिस्टेंस है, 725 आफ्टरनून में भी डिस्कस किया था हमने। आई थिंक आज का हाई इज 723 समथिंग। whenever high volume sell off is there, see high volume से राइज या हाई वॉल्यूम से सेल ऑफ, उससे कुछ फर्क नहीं होता। बात होती है कि कॉन्टेक्स्ट और कंटिन्यूएशन। सो इफ देयर वाज अ हाई वॉल्यूम, for what stock you are saying high volume in this fall, delivery based saying, which fall? Axis Bank, specify which stock you are referring। okay, interesting, IndusInd Bank आज इसने 92, यस, परफेक्ट रेजिस्टेंस लिया है IndusInd बैंक ने। नाउ फॉर टुमारो आई एम, IndusInd बैंक पे एक मैं ट्रेड देता हूँ फॉर टुमारो। फॉर टुमारो IndusInd Bank, this candle is nice, I like this candle। not the best place, but still I will take a chance, I will take a chance। okay, so IndusInd Bank tomorrow 14 1450 is the mob level, 1450 is the mob level, 1438 is the SL, upside target 1492, and once we break 1492, 1500 and 1550। okay, so I am expecting IndusInd Bank, I don't know where it will open, but suppose if my this level is protected, then I'm looking an up move in IndusInd Bank। so anybody who is willing or who is interested to buy, you should buy as low as possible। okay, so preferably near 1455 or 1450, this you should buy near to this, as near to this as possible। keep 12 point stop loss, only 12 point stop loss, and target will be very big। so let's see how it goes, because as per the price and volume which I'm seeing, tomorrow if bears fail to push IndusInd Bank down, it can move up quickly 50-60 points। okay, so that's what I'm seeing from the chart on IndusInd Bank।
So I guess I've answered all your queries. There are no queries as of now. So time for me to wind up the session. All right. Crude oil, I can discuss if anybody is interested. Crude oil, today's downside target was 4140, and I think that is exactly the low in crude oil. So again, you could have made money in crude oil by going short or by going some minor long. All right. Okay, I think we have discussed everything, and I'm done for the day. It's already 40 minutes into this live session, so let us not waste time. And okay, so thank you guys for your time and patience and for listening me. So I'll meet you guys tomorrow afternoon. कल दोपहर में मुलाकात होगी. आफ्टरनून सेशन हो सकता है मैं फेसबुक लाइव करूं. सो अगर आप लोग फेसबुक पे कनेक्टेड हैं मेरे साथ, फेसबुक पेज को आपने अगर लाइक किया है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. तो उस समय हम मिलेंगे एंड फिर बाजार की डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे. ऑलराइट. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच. बिटकॉइन कल करेंगे. कल बिटकॉइन वगैरह कल करेंगे. अभी आज कुछ मत करो, आज टच मत करो बिटकॉइन को. ठीक है. सो कल मिलते हैं. ओके. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब and do all those things to promote the channel, and we'll meet you tomorrow. Okay, चलिए. Thank you. धन्यवाद. Good night.